When do you see a bodybuilder struggling? Every day at the gym. Even if he's very strong, he's struggling with heavier weights. An entrepreneur is always positively struggling. When you get out from university, you understand maths, physics, geography, 4-5 सब्जेक्ट समझ आते हैं. फिर हम थोड़ी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं. फिर जब हम रियल वर्ल्ड में जॉब करने जाते हैं तो हम देखते हैं मुझे ये वाली चीज सबसे ज्यादा पसंद है, इसमें मैं अपनी पूरी लाइफ या 5 साल जो भी लगाऊंगा. एंड सो यू ऐड दीज 4-5 एलिमेंट्स. उसके बाद आप टूल कोई मर्जी यूज करो. टूल से बहुत ज्यादा 19-20 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला टूल. अच्छा, मैं फेसबुक एड में टारगेट करके आई कैन सेल अ हुडी to people in London. Don't need to manufacture the hoodie. I can get somebody in Africa to make the hoodie. Marketing भी हो जाएगी सब. अच्छा, ये सब भी हो सकता है. अच्छा, possibilities को समझने के लिए कि क्या क्या हो सकता है, I think you should do a course. Hi, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then marketer and founder of Internet Moguls. What up, Internet Moguls? Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to another episode of the AskAviArya show, where we are inviting entrepreneurs who are coming and asking questions about life, entrepreneurship, happiness, digital marketing, family, and everything in between. So our today's special guest is Dr. Bhavna. Dr. Bhavna, how are you? I'm good. Thank you, Avi. Thank you so much. Awesome. Dr. Bhavna, you have a few questions for the AskAviArya show. Please go for it. Yes. So my first question to you is, when do you consider an entrepreneur struggling, and when do you consider an entrepreneur satisfied? An entrepreneur is struggling when he's at work. Doesn't matter when. Whenever he's at work, he's struggling. Because if you're not struggling, means you're not working on your next level. And the next level is always unclear. आगे तो देख नहीं रहा. कुछ ना कुछ हमेशा टूटा हुआ है. तो an entrepreneur is always positively struggling. Now, when I mean struggling, when you go into the gym, it's like saying, when do you see a bodybuilder struggling? Every day at the gym. Every day he's struggling. Even if he's very strong, he's struggling with heavier weights. When is he satisfied? I think when the entrepreneur comes back home and he's with his family and he says सब कुछ ठीक है, he feels satisfied कि ठीक है, मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ. Everybody seems happy around me. Okay, great. Now my second question is for someone who is for whom social media is completely an alien domain. Like for people like me, we've never been into social media. So is there any particular sequence of steps, like this is chapter 1, chapter 2, chapter 3, or is it like whatever you understand first, do it first? Is it like that? See, or is there a sequence? I definitely believe that now there are some very good universities which are giving very good courses. They give you a very nice sequential program. So either work in a digital marketing institute and do a program to understand what are the possibilities. अच्छा, ये भी हो सकता है. अच्छा, मैं Facebook ad में target करके I can sell a hoodie to people in London. And the hoodie will be, I don't need to manufacture the hoodie. I can get somebody in Africa to make the hoodie. Marketing भी हो जाएगी सब. अच्छा, ये सब भी हो सकता है. अच्छा, I can become a coach and do a webinar. I don't need to open an office. अच्छा, ये भी हो सकता है. अच्छा, I can, the possibilities को समझने के लिए कि क्या क्या हो सकता है, I think you should do a course because they're very good structured courses today. And after that, you get into the real world and understand what other people are doing to be able to see what is it that you want to do more of. When you get out from university, you understand maths, physics, geography, 4-5 सब्जेक्ट समझ आते हैं. फिर हम थोड़ी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं. फिर जब हम रियल वर्ल्ड में जॉब करने जाते हैं तो हम देखते हैं मुझे ये वाली चीज सबसे ज्यादा पसंद है, इसमें मैं अपनी पूरी लाइफ या 5 साल जो भी लगाऊंगा. So like that, first do a course, then go into the real world and see what are the things that you really like, pick up 1 or 2 things and outsource everything to the rest, to somebody else. That means it's not necessary to do everything. It is what you like and you think is best for you. Yes, for everybody, for everything else, there is collaboration. There is, that's what an entrepreneur does best. जो अच्छा लगता है वो खुद कर लेते, जो अच्छा नहीं लगता या जिसमें आपको लगता है कि मेरे को चैलेंज आ रहा है, उसके लिए आसपास टीम बना दीजिए. Right, perfect. Thanks. Great answer. My next question is, if I have to choose a digital marketing agency for myself, what is the criteria or how should I assess? Beautiful question. ये इतना ज़रूरी question है. So now the thing is, there are multiple types of agencies. There are some people, सबसे आसान है आज की डेट में आपने सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम में लिख दिया I'm an agency owner, आप कल सुबह से agency owner बन जाते हो. Now, do you have a holistic understanding of business? Or are you only doing one thing? Are you only doing video editing? Are you only doing graphics? Are you only doing blogs? So first is to understand what is the strength. So there should be a proper questionnaire asking people what was the background of the people who starting the agency. क्यों start करी? तो कुछ मैं होटल्स में काम करता था, फिर मैंने होटल्स को हेल्प करने के लिए किया, या मैं रियल एस्टेट में काम करता था. सो यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोमेन. सो आपको सबसे पहले चीज ये देखनी है कि आपकी एजेंसी शुड नो योर बिजनेस वेरी वेल.
हम उनसे Right. ये बात तो बाद में पूछ लेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी आती है तुम्हारे को, बट फर्स्ट वी नीड टू आस्क देम how much do they know about your business, because if they know about your business, then they're the right people to help you. Second, if an agency does not have case studies Okay. of people who they have gotten results from, and those case studies testimonial जो दिखा रहे हैं वो नहीं, I would call up people, give me at least 3 people who are happy with you, जिन्होंने आपके साथ पैसे लगाए and they got good results. I would call up those people, and if those two things are there, like industry domain expertise and at least 3 testimonials, I call up the people and they give a good review, then I would start working with you. Okay, fine. So my next question is, how is digital marketing, is it different from advertising, or is it different aspects of same coin or something? So digital marketing is everything that you can do on the world wide web. कुछ इसमें ऑर्गेनिक भी आता है, कुछ इसमें पेड मार्केटिंग भी आता है. सो यस, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है वो. एडवर्टाइजिंग बेसिकली इज हाउ यू रीच आउट टू पीपल. If you have a message in your heart or a product or a service to sell to others, what do you do? What copy do you write? What messaging do you have? What outreach strategies you use so that more people get to know about your message? उसको I think advertising की एक मोटा definition हो गई. Digital marketing is यही सारी चीजें अगर आप इंटरनेट पे कर सकते हो, so that is digital marketing. Okay, fine. And my next question is that everything has pros and cons, right? So far we've just discussed like pros of digital marketing. Are there any cons, or in other words, what should be one careful about when going into digital marketing? See, I'll tell you, just like yoga, just like meditation, just like going to the gym, just like art, just like any kind of new thing that has come and can change. Like yoga can change people's world. Going to the gym can change your world completely. Digital marketing can also change the way that you do your business. Complete disruption, and you can be the happiest person in your life, because आपकी लाइफ में बहुत बड़ी possibilities, opportunities खुल सकती हैं. उसका disruption ये है that if you work with the wrong partner, then आपका क्या होता है, आपका faith खत्म हो जाता है उस सिस्टम में, फिर आप उसको ठीक तरीके से नहीं करते. हमने आप क्या करते हैं, हमको योगा करना है, मुझे अपनी बॉडी को बदलना है. I will choose the cheapest yoga tutor जिनको शायद ही कुछ आता होगा, तो मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा नहीं. 3-4 महीने और निकल जाएंगे और मेरा सबसे बड़ा नुकसान होगा कि मेरा योगा के ऊपर से विश्वास हट जाएगा. सिमिलरली विद डिजिटल मार्केटिंग, इतनी बड़ी फील्ड है, इतना कुछ किया जा सकता है, बट इफ आई चूज द चीपेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, तो वो आदमी या उसको कुछ नहीं आता होगा, वो मेरा काम खराब होगा एंड मेरा फेथ खत्म हो जाएगा. आई थिंक सबसे बड़ा डर डिजिटल मार्केटिंग का यही है कि हम उसको पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे by choosing the cheapest partner in the industry. Right. Okay. Now, my last question is, like, if I have to do an offline coaching, I can do it anytime, you know. But to be an online coach, it is basically a transformation process. So if I have to choose someone who can help me formulate, not market, formulate an online course, put my content in a structured way. So what do you think is the best platform? You know, what would you suggest? So there are many platforms. I use Thinkific, some people use Teachable, then some people use Kajabi. Now, to create an online course, number one thing you have to ask yourself is, what is the transformation that I am promising? I will help you lose 5 kilos in the next 5 weeks. Or I will help you get up at 5 a.m. Some people want to get up, नहीं उठा जाता उनसे. Some people like, I want more discipline in my life. Some people say कि husband wife की लड़ाई हो रही है, I want to have a peaceful atmosphere when I reach home. So what is the outcome? Number one, your course should have an outcome. Number 2, it should have your target audience in mind. आपकी target audience के पास समय है, क्या 5 हफ्ते हैं उनके पास, या 5 महीने हैं उनके पास, या 5 दिन हैं उनके पास? Would they rather want a weekend course that they can finish jaldi, या would they want a long term course? So based on your customer avatar, you see what should be the duration. So second is the duration. Third part is duration के हिसाब से you will have modules. For example, if it's a 5-week course, you'll have a module. फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा. फोर्थ इज गेमिफिकेशन. यू हैव टू मेक इट फन. टू मेक इट फन, यू हैव टू हैव अ कंपटीशन. ओके, सम Q&A quiz, और जैसे क्विज होगा, यू से दैट winners get a book. I'm going to ask you 10 questions, and at the end of you do all 10 questions, I'm going to send you 10 books. One book is 500 rupees, 10 books is 5,000 rupees. But sending a personalized book, कोई भी अच्छी सी आपकी जो फेवरेट बुक्स है, I love to gift books. मेरे पास हजारों तो नहीं, 400-500 बुक्स हमेशा होती है, because when I go to the store, मैं बहुत सारी लेके आता हूँ, and then I write my name, and I send it out. So keep those books, make a gamification system for your students. When people do something, then they're going to get a book from Dr. Bhavna. So एक
एक एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट आती है टू बी एबल टू डू इट. तो ये हो गया आपका गेमिफिकेशन. फाइनली इज कीपिंग एन अकाउंटेबिलिटी ग्रुप. सो नोबडी लाइक्स टू डू वर्क अलोन अनलेस दे आर हेल्ड अकाउंटेबल. सो देयर शुड बी एन अकाउंटेबिलिटी ग्रुप और अ बडी पार्टनर ग्रुप where 3-4 people are doing the course together and logging in their success on the WhatsApp group. Is regular follow-up. So like having a Tuesday meeting or Thursday meeting we do. Similarly having a meeting to say, oh fine, how is your course doing? So normally people feel that एक online course मैंने बेचा, उस videos दे दी, ये लोग अपने आप कर देंगे. लेकिन उस ये सारे elements डालना बहुत जरूरी है so that people actually finish it. So number one was transformation. Then we spoke about the according to the customer avatar, the duration. Then we spoke about the modules. Then we spoke about gamification. Then we spoke about community. And so you add these 4-5 elements. उसके बाद आप tool कोई मर्जी use करो. Tool से बहुत ज़्यादा 19-20 से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला tool में. But you make it in such a way because what happens, Dr. Bhavna, is that when it is made for that specific person and the whole thing is based on that person's needs, ऐसे करके course बिकता है, अच्छे प्राइस में बिकता है, people are happy, good reviews and you also feel happy being an entrepreneur. I'll give you an example. 4 दिन पहले मैंने एक ad, beautiful ad I saw. Winters में क्या होता है? You know, I put on weight in the winters. You're working out, but you're not doing a lot of cardio. समर आने वाला है, ये हुडीज के उतरने का टाइम आ जाता है, ठीक है. तो उसने एक एड देखा मैंने टीवी पे, उस पे फेसबुक पे, कि विंटर के कपड़ों में छुप रहे हो, समर आने वाला है, 2 महीने भी नहीं बचे, आपका टी शर्ट पहनने का टाइम आने वाला है, फिर क्या करोगे. मैंने पूरा ध्यान से उस एड को देखा भी क्या कहने वाला है. इट वाज फॉर समबडी लाइक मी. In winters I let myself go, in summers I start working out like the way, you know, cardio and everything. So जब उसने मेरे लिए बनाया, अच्छा, similarly healthify me करके वो ऐप आया है. वो ऐप में जो स्टोरीज होती हैं अबाउट, आई ऑलवेज फील दैट समबडी शुड गिव मी द राइट डाइट और मैं उसको खा लूं. मैं रोज सोचना बड़ा मुश्किल होता है. सो दे सेड, आप रोज परेशान हो जाते हो डाइट लेके, वील गिव यू द राइट डाइट. सो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मैसेज. वहां से मैं आप उनके एड के अंदर जाओगे. सो पीपल विल कम इनटू डॉक्टर भावना's एड. देन व्हेन यू कम इनटू द एड, दे गिव यू द ड्यूरेशन. सो फाइन, ज्यादा नहीं है, बस 15 आधा घंटा रोज आपको लगाना है. तो मुझे लगता है हाँ, एज एन एंटरप्रेन्योर आधा घंटा तो मैं रोज लगा सकता हूँ. तो ड्यूरेशन आपने कोर्स की वो बनानी है जो लोग रोज कर सकते हैं. उसके बाद थर्ड इज, देन यू से व्हाट आर द मॉड्यूल्स. तो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज माइंडसेट, थर्ड इज योगा. ओके ठीक है, मैं ये भी कर सकता हूँ. देन इज गेमिफिकेशन. जैसे आप अकेले नहीं कर रहे हो, हमारे कोर्स में 15 लोग हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे आर डूइंग इट टुगेदर. ओह सो गुड यार, मजा आएगा, नए लोगों से मिलने को भी मौका मिलेगा और आप लोग सब अपने बिजनेस के बारे में बात कर सकते हो. तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट एंड फीचर योर बिजनेस. एंड फाइनली देयर इज अ सर्टिफिकेट एंड एन अवार्ड. व्हेन यू डू दिस, यू गेट इनटू माय नेक्स्ट लेवल एंड आई सेंड यू सम गिफ्ट्स एट होम. सो आई नो दैट देयर इज अ रिवॉर्ड एट द एंड ऑफ इट. So that's what I think a good course should be. Good transformation, good community, so that people are able to finish. One very important point to keep in mind, Dr. Bhavna, है कि आपके कोर्स में जो मॉड्यूल्स है ना, 1 2 3 4 5, वो मॉड्यूल्स का जो एक टाइटल है, वो आपके ऑडियंस को होना चाहिए. यस मुझे तो ये भी चाहिए, यस मुझे ये भी चाहिए, यस मुझे. ऑल दोस 5 6 7 मॉड्यूल्स, वो जो पड़ाव होते हैं, कि वो जो सीढ़ियां हैं उसकी सक्सेस की, हर सीढ़ी का जो टॉपिक है वो होना चाहिए, यस मुझे तो यही करना है. सो that all comes from understanding your customer avatar, the transformation, the topic of the course, what transformation I'm providing, and the topic of the modules, and then uske aage ancillary cheezein jo maine boli ke community and all of that. So courses do very well. One more thing I'd like to emphasize on is, कोर्स के साथ हमेशा एक लाइव एलिमेंट होना चाहिए, बिकॉज अगर कोर्स दे के किसी को छोड़ दिया तो लोग करते नहीं है. So there should be a live support element all the time, so people are able to go to the next level. Because as coaches, our job is to get people, not to sell courses. Normally आजकल courses हो देते हैं कि I am a successful coach क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्स बेच दिए. नहीं, आप सक्सेसफुल कोच तब है जब आपके स्टूडेंट्स ने सक्सेस पा ली. So we have to make them win, then we are successful. Right. Yeah. Thank you so much. Awesome. So, ladies and gentlemen, I hope you enjoyed this show with Dr. Bhavna. If you have any such questions around coaching or entrepreneurship, please drop it in the comment box and let us know in this conversation what is the one thing that you learned from Dr. Bhavna. Please let us know in the comments below. Thank you very much. Don't forget to watch the next episode. And remember, we're giving gifts, prizes, hoodies, caps, and the final prize is the 1+8 given to the most engaged subscriber. So if you're commenting, continue commenting, because we're looking out for the most engaged subscriber to be able to get these awards too. Thank you very much for watching, and don't forget to watch the next episode.